Good morning, Fujis here. So let us start with the revision of SA 530, that is audit sampling. ठीक है, audit sampling का मतलब क्या होता है? मैंने बोला it refers to the application of audit procedures. मैं audit procedures लगा रहा हूँ to less than 100% of the items in the population. ठीक है, so application of audit procedures to less than 100% of items within a population relevant under audit. So the point here is that the population should be relevant to audit. ठीक है, such that all sampling units have a chance of selection. ये जो equal word है ना, it is something that is not actually truly correct. ठीक है, तो it should be like a sample should have a chance of selection. ठीक है, हो सकता है जब हम मॉनिटरी यूनिट सैम्पलिंग पढ़ेंगे तो वह जरूरी नहीं है कि इट हैज इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन. वहां पे क्या होगा, जिसकी ज्यादा वैल्यू है ना उसके ज्यादा चांस होंगे सिलेक्शन के. तो इसलिए आई डोंट अग्री विद दिस वर्ड इक्वल, बट या the rest definition is all okay. That is, audit sampling refers to the application of audit procedures to less than 100% of items within a population relevant under the audit, such that all sampling units have a chance of selection. इक्वल वाल एक बार अभी आप इग्नोर कर दो, क्योंकि जब आप एमयूएस पढ़ोगे, मॉनिटरी यूनिट सैम्पलिंग पढ़ोगे, तो वहां पे आप देखोगे जिसकी हायर वैल्यू उसके ज्यादा चांसेस है सिलेक्शन day. So it refers to the application of audit procedures to less than 100% of the items within a population, such that all sampling units have a chance of selection. This is to ensure that all items selected represent the entire population, which enables the auditor to draw a conclusion and express his opinion based on a predetermined objective. So what is the objective of the auditor? The objective of the auditor when using audit sampling is to provide a reasonable basis for the auditor to draw a conclusion about the population from which the sample is selected. तो मैंने बोला, what is the meaning of audit sampling? Audit sampling means the application of procedures to less than 100% of the items within a population, such that all sampling units have a chance of selection. To ensure that the item selected represents the entire population, which enables the auditor to draw a conclusion and express his opinion based on a predetermined objective. The objective of the auditor when using audit sampling is to obtain a reasonable basis for the auditor to draw a conclusion about the population from which the sample is selected. तो मैंने बोला, what is the objective of the auditor? मुझे reasonable basis मिल जाए ताकि I can draw a conclusion about the population from which the sample is selected. So objective of the auditor when using audit sampling is to have the reasonable basis for the auditor to draw a conclusion about the population from which the sample is selected. Audit sampling का मतलब क्या है? It means the application of procedures to less than 100% of the items in a population, such that all sampling units have a chance of selection. What is the scope of SA 530? This standard deals with the auditor's use of both statistical and non-statistical sampling. Statistical sampling के अब हम आगे जब जाके पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे तीन टाइप्स है जो कि स्टैंडर्ड में कवर्ड है. दैट इज रैंडम सैम्पलिंग, सेकंड वन इज सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, थर्ड वन इज मॉनिटरी यूनिट सैम्पलिंग. एंड नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग के दो टाइप्स है. वन इज haphazard sampling, second one is block sampling. ठीक है, when designing and selecting the, so this standard deals with the auditor's use of statistical and non-statistical sampling when designing and selecting the audit sample, performing test of control and test of detail, and evaluating the results from samples. So when designing and evaluating the designing and selecting the sample, when performing test of control and test of detail, very important to note, it is applicable to only the performance of test of control and test of detail. Sampling is not applicable to substantive analytical procedure, neither it is applicable to risk assessment procedure. It is only applicable to test of control and test of detail. So when designing and selecting the audit sample, performing test of controls and test of detail, and evaluating the results from the sample. So it deals with the auditor's use of statistical and non-statistical sampling when designing and selecting the audit sample, performing test of controls and test of detail. So it deals with the auditor's use of statistical and non-statistical sampling when designing and selecting the audit sample. या फिर मैं test of controls कर रहा हूँ, performing test of controls and test of detail. It is not applicable on risk assessment procedure and substantive analytical procedures, and then evaluating the results from the sample. तो मैंने बोला बहुत सिंपल है. सबसे पहले अपन करते हैं मीनिंग ऑफ ऑडिट सैम्पलिंग. मैंने बोला इट मींस द एप्लीकेशन ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स टू लेस देन 100% of the items within a population, such that all sampling units have a chance of selection, to ensure that the items selected represent the entire population, so that to enable the auditor to draw reasonable conclusions and express his opinion on the based on the predetermined objective. What is the objective of the auditor? Objective of the auditor using audit sampling is to have a reasonable basis for the auditor to draw a conclusion about the population from which the sample is selected,
Scope of this essay deals with the statistical and non-statistical sampling when designing and selecting the audit sample, when performing test of controls and test of detail, and when evaluating the results from the sample. So standard deals with the auditor's use of statistical and non-statistical sampling when designing and selecting the audit sample, performing test of controls and test of detail, and evaluating the results from the sample. What is the interrelationship between SA 500 and SA 530? मैंने बोला SA 500 ने आपने तीन methods of selection पढ़े थे of testing, like selecting all the items, 100% items select कर लो, या फिर selecting some specific items like high value items, या फिर items above a certain amount, या फिर items to obtain information. हमने तीन चीजें पढ़ी थी, selecting some specific items, या फिर we also learnt about the concept of audit sampling. So SA 530 deals with audit sampling. So SA 500 and SA 530 has got a linkage. तो मैंने बोला population. So मैंने बोला it refers to the selection of an so it refers to the application of audit procedures to less than 100% of items in a population that is relevant to audit. ठीक है, within a population that is relevant to audit, है ना. Important point क्या है? It refers to the application of audit procedure to less than 100% of items within a population relevant under the audit. ठीक है, तो what are the characteristics of the population for it to be relevant to audit? तो मैंने बोला it should be appropriate, it should be complete, and it should be reliable. ठीक है, मैंने बोला appropriateness means relevance of that information, relevance of that population to the purpose of the audit procedure. ठीक है, so the auditor will need to determine that the population from which the sample is drawn is appropriate for the specific audit objective. Appropriateness means population from which the samples are drawn shall be relevant for the specific objective under audit. So the population should be relevant to the specific objective under audit. ठीक है, it should be appropriate for the specific objective, it should be relevant for the specific objective. ठीक है, अब जैसे मान लो अगर आपको अंडर स्टेटमेंट ऑफ पेबल चेक करना है तो आपके लिए जो पॉपुलेशन रेलेवेंट है दैट इज सब्सिक्वेंट डिसबर्समेंट्स, ना कि एपी एजिंग रिपोर्ट. तो दिस वाज द एग्जांपल वी आल्सो डिस्कस्ड इन एसए 500. तो मैंने बोला जब आपको अंडर स्टेटमेंट ऑफ पेबल्स देखना है तो आपको ये देखना पड़ेगा कि बाद में ईयर एंड रिपोर्टिंग के बाद में कितने क्रेडिटर्स को पेमेंट हुई है. देन कम्स द कंप्लीटनेस. मैंने बोला पॉपुलेशन आल्सो नीड्स टू बी कंप्लीट from which the auditor intends to use the sample to draw conclusions about whether a control activity is operating effectively. So अगर मुझे ये conclusion draw करना है कि भाई कंट्रोल ऑपरेट इफेक्टिवली हुआ है तो मुझे इंश्योर करना पड़ेगा कि जिस पॉपुलेशन में मैं सैंपल ड्रॉ कर रहा हूँ द पॉपुलेशन नीड्स टू इंक्लूड ऑल रेलेवेंट आइटम्स, दैट इज ऑल इंस्टेंसेस ऑफ द ऑपरेशन ऑफ द कंट्रोल. तो अगर मान लो मैं सैंपल्स पिक कर रहा हूँ ऑफ द टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, आई नीड टू एंश्योर दैट द पॉपुलेशन इंक्लूड्स all instances of the operation of the control. ठीक है, that is all activities that form part of the relevant internal control throughout the entire period. So the population should be complete, population should be appropriate. Appropriateness means relevant to the specific audit objective. And third is reliability. The auditor perform audit procedures to ensure that the information upon which the audit sampling is performed is sufficiently complete and accurate. Reliability means completeness and accuracy of the information that the auditor perform audit procedures to ensure that the information upon which the audit sampling is performed is sufficiently complete and accurate, and it is about the accuracy and source. So auditor shall obtain evidence about the reliability of the population. If the population is not reliable with respect to the accuracy and source, the sample drawn will definitely not be relevant. मैंने बोला completeness हमने already cover कर लिया था. So reliability covers the relevant, you can say accuracy and source from which the population has been obtained. ठीक है, if the population is not reliable with respect to the accuracy and source, the sample drawn will definitely not be relevant. Appropriateness means relevance, completeness means complete होना चाहिए, reliability means accuracy and source. ठीक है, so if the population is not reliable with respect to accuracy and source, sample drawn will definitely not be relevant for the specific audit objective. मैंने बोला सैम्पलिंग यूनिट क्या होती है, मैंने बोला दीज आर द इंडिविजुअल आइटम्स दैट मेक्स अप द पॉपुलेशन. It can be the population can be divided into sampling units in a variety of ways. एग्जांपल लिया हमने ला लो मेरा ट्रेड रिसीवेबल है 600 रुपए का, तो मैंने बोला मैं इसे डेटर लेवल पे भी बाइफरकेट कर सकता हूँ, मैं इसे इनवॉइस लेवल पे भी बाइफरकेट कर सकता हूँ. तो मैंने बोला सैम्पलिंग यूनिट दीज आर द इंडिविजुअल आइटम्स दैट मेक अप अ पॉपुलेशन. ठीक है, तो पॉपुलेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू सैम्पलिंग यूनिट्स इन अ वैरायटीज ऑफ वेज. तो मैंने बोला मैं कस्टमर लेवल पे भी सैम्पलिंग यूनिट मान सकता हूँ, मैं इनवॉइस लेवल पे भी सैम्पलिंग यूनिट मान सकता हूँ. तो जो मैं सैम्पलिंग यूनिट मानूंगा वो दैट
that should be efficient and effective. ठीक है, so the auditor defines the sampling unit in order to obtain an efficient and effective sample to achieve a particular audit objective. तो अगर मान लो मुझे पता है कि मेरे ट्रेड रिसीवेबल में सारे इनवॉइसेज है, कोई भी नेगेटिव एंट्री नहीं है, तो मैं क्या डिसाइड कर सकता हूँ कि आई विल सेंड दी सैंपल एट एन इनवॉइस लेवल, ताकि मुझे आसानी हो जब ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर करूं। अगर क्योंकि मैं अकाउंट बैलेंस लेवल पे भेजता हूं, तो मान लो अगर एक अकाउंट बैलेंस में 50 इनवॉइसेज आते हैं और उसका कंफर्मेशन मुझे नहीं मिलता, तो मुझे वो 50 इनवॉइसेज की टेस्टिंग करनी पड़ेगी। सो ऑडिटर डिफाइंस द सैम्पलिंग यूनिट इन ऑर्डर टू ऑब्टेन एन एफिशिएंट एंड इफेक्टिव सैंपल टू अचीव अ पर्टिकुलर ऑडिट ऑब्जेक्टिव। अभी मेरा यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या है, दैट इज वन इज एग्जिस्टेंस को टेस्ट करना, दूसरा वैल्यूएशन को टेस्ट करना, ठीक है। एंड बस यही मेरे दो ऑब्जेक्टिव्स है, एग्जिस्टेंस एंड वैल्यूएशन। तो मैंने बोला ये तो अगर मैं इनवॉइस लेवल पे टेस्टिंग करूँ तो भी अचीव हो जाएगा। तो आई हैव टू डिसाइड वेदर सैम्पलिंग यूनिट कैन बी एट एन इनवॉइस लेवल और एट एन कस्टमर लेवल। सो the point here is you can divide sampling unit in a variety, you can divide the population in a variety of ways to into a sampling unit. So conclusion drawn on a sample becomes conclusion of the population from where it is drawn. ये तो हमें पता ही है, right? So example we have already discussed, like AR can be divided into customer balances and then invoice level balances. Whether you use statistical sampling or non-statistical sampling, you must ensure that the sample is representative of the population. Sample must be representative of the population from which it has been drawn, so that it must be closely similar to the whole population, although not necessarily exactly the same. So this line is very important. Whether you use statistical sampling or non-statistical sampling, the sample must be representative of the population from which it has been drawn. This means that it must be closely similar to the whole population, although not necessary. It must be the exactly the same. Sampling process is used in test of controls, test of detail, but not in risk assessment procedure, not in substantive analytical procedure. Test of controls में क्या ढूंढने के लिए हम सैम्पलिंग कर रहे हैं, ताकि हम डिविएशन ढूंढ पाए। और टेस्ट ऑफ डिटेल्स में हम क्या ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, मिस स्टेटमेंट्स को। डिविएशन मींस कंट्रोल उस तरीके से ऑपरेट नहीं हुआ जिस तरीके से होना चाहिए था, उसने ऑपरेट नहीं किया, बाय हाउ इट हैज बीन ऑपरेटेड, बाय whom it has been operated, and the consistency with which it has been operated, उसे हम deviation बोलते हैं। Misstatement means the amount, classification, presentation and disclosure as reported in the financial statement is not in accordance with the applicable FRF. तो sampling process is performed on test of controls to identify deviation, test of details to misstatement. Sampling is not performed at the time of performing SAPs and risk assessment procedures. अब अपन चलते हैं स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग के ऊपर। मैंने बोला चाहे स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग यूज करो चाहे नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग करो, योर सैंपल मस्ट बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन फ्रॉम विच इट हैज बीन ड्रॉन। स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग क्या होती है, मैंने बोला इट हैज गॉट रैंडम सिलेक्शन ऑफ द सैंपल यूनिट्स, कोई भी सैंपल पिक हो सकता है, दैट इज रैंडम सिलेक्शन ऑफ द सैंपल यूनिट्स एंड यूज ऑफ प्रोबेबिलिटी थ्योरी टू इवैल्यूएट सैंपल रिजल्ट्स इंक्लूडिंग मेजरमेंट ऑफ सैम्पलिंग रिस्क। मैंने बोला आप प्रोबेबिलिटी थ्योरी को यूज करते हो टू इवैल्यूएट सैंपल रिजल्ट्स, ठीक है, कि भाई अगर एक सैंपल में गलती मिली है तो 10 सैंपल में कितनी मिलती, ठीक है। सो यू यूज प्रोबेबिलिटी थ्योरी टू इवैल्यूएट सैंपल रिजल्ट्स इंक्लूडिंग मेजरमेंट ऑफ सैम्पलिंग रिस्क कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। तो मैंने बोला इट इज एन अप्रोच टू सैम्पलिंग that has the random selection of the sample units and uses probability theory to evaluate sample results and also the sampling risk। तो मैंने बोला इसमें random selection होता है and it uses probability theory, probability के मल्टीप्लीकेशन में मल्टीप्लाई करता है कि भाई अगर एक सैंपल में गलती मिली है तो अगर मैं पूरी पॉपुलेशन पे करता तो कितनी गलती मिलती। नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग क्या होती है, जिसमें दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होते, मतलब ना तो ये रैंडम सिलेक्शन होता है, ठीक है, डज नॉट हैव कैरेक्टरिस्टिक्स 1 and 2 इज कंसिडर्ड नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग, ठीक है। सैंपल साइज एंड इट्स कंपोजिशन आर डिटरमाइंड बेस्ड ऑन दी personal experience and knowledge of the auditor. It is so sample size and you can say composition is determined on the basis of personal experience and knowledge. So statistical sampling uses the random selection and also uses the probability theory to evaluate the sample results including measurement of sampling risk, ठीक है। what is the benefits of, you can say what are the benefits of having a statistical sampling। मैंने बोला it is more scientific, audit testing done through this approach is more scientific than testing done based on the auditor's judgment because it involves use of mathematical laws of probability। मैंने बोला it is more scientific, there is no personal bias in statistical sampling,
since it is scientific, the results of this sample can be evaluated and projected on the whole population in a more reliable manner. मैंने बोला एक तो ये scientific है, it does not involve any personal bias. अभी limitation बन जाएगी यही कि मैंने बोला non statistical sampling की क्या limitation है. मैंने बोला it is neither objective nor scientific. मैंने बोला it is neither objective nor scientific. There is a risk of always personal bias and the closeness of the qualities projected by the sample result with, मतलब मैंने बोला जैसे यहाँ पे आप बेधड़क you can evaluate the sample result to the entire population, but you have to hear the closeness of the qualities projected by the sample result with that of the whole population cannot be measured because the sample has not been selected in accordance with the mathematically based statistical technique. So the projection of the sample to the entire population requires some more judgment. So this approach has been in common application because of its simplicity in operation. What are the advantage of non-statistical sampling? Is only one, that is it is simple in operation. ठीक है, अभी आप statistical sampling कहाँ पे लगाते हो? मैंने बोला large number of smaller items पे लगाते हो. More in case of transaction involving compliance testing means test of controls में ज्यादा लगाते हो. Test of controls में आप ज्यादा यूज करते हो उसे. Trade receivables confirmation, payroll checking, vouching of invoices and petty cash vouchers. मैंने बोला large number of smaller items. More in case of transaction involving compliance testing, that is test of controls, trade receivables की confirmation में, payroll की checking में, and vouching of invoices and petty cash vouchers. Example ले लो कि अगर आपको purchase transactions को verify करना जो कि 45,000 बार हुआ है साल में, तो you will prefer to use statistical method of sampling. Statistical method के दो feature है, that is it has got random selection and it uses probability theory to evaluate the sample results along with the measurement of the sampling risk. अभी अगर मान लो if the sample has been selected based on the personal knowledge, personal experience or knowledge of the auditor, then it is known as non-sampling. What is the limitations of it is it is not objective nor scientific. It involves personal bias and the results of the sample cannot be projected to the entire population because the closeness of the qualities projected by the sample result with that of the whole population cannot be measured. But it has got one benefit, that it is simple in operation. Okay, what are the benefits of statistical sampling? It is objective, it does not involve any personal bias, and the results of the sample can be projected to the entire population. Application: large number of similar items, test of controls, payroll checking, trade receivables confirmation, vouching of invoices and petty cash vouchers. What sampling when compared to the traditional method of auditing? Traditional method में आप 100% ऑडिट करते थे, 100% ट्रांजेक्शन को वेरीफाई करते थे, फिर भी शायद आपको उतना कंफर्ट नहीं आ पाता था. Even by undertaking 100% checking of the transaction, the auditor does not derive absolute satisfaction. अगर आप 100% चेकिंग कर लेते हो तब भी आपको absolute satisfaction नहीं आता, आपको reasonable satisfaction नहीं आता. This state of uneasiness led auditor to adopt the statistical theory of sampling to derive the necessary satisfaction about the state of affairs by checking only a part of the population of entries. It is the mathematical truth that the sample, if picked up on a random basis, would reveal the features and characteristics of the population. The satisfaction he used to derive earlier by checking all the transaction can be derived by sample checking, provided he can put reliance on the internal control. अगर मैं reliance कर पा रहा हूँ on the controls and the checks within the client's organization, I can rely on the internal controls and check within the client's organization because they provide the reliability of the records. मैंने बोला if I am able to rely on the controls and checks of the organization, which in turn ensure the reliability of the internal records, then I can think about checking transactions on a sample basis. So satisfaction जो मुझे पहले सारे transaction को check करके मिलती थी, that can be derived if I check the transaction on sample basis, provided he can put reliance on the internal controls and check within the client's organization because they provide the reliability of the records. Another truth about sampling technique should be noted that it can never bring complete reliability. कभी भी 100% reliability नहीं आ सकती. It cannot give precisely accurate result. तो 100% reliability या फिर 100% accurate result नहीं मिल सकते थे. It is a process of estimation. It may have some error जिसको हम बोलते हैं sampling error. What error is tolerable for a particular matter under examination is a matter of individual judgment. So sampling has got some better truths, that is it can never completely bring reliability, it cannot give precisely accurate result. It's a process of
estimation, it may have some error. What error is tolerable for a particular matter under examination is a matter of professional judgment. मैंने बोला अगर देखो the satisfaction he used to derive earlier by checking all the transaction can be derived by sample checking, provided he can put reliance on internal control and checks because they provide the reliability of the record. अगर मैंने बोला reliability of the internal control and the books of account and record अगर अच्छी है तो मैंने बोला lesser sample होंगे. अगर reliability of the internal control not satisfactory है तो higher sample होंगे. मैंने बोला controls अच्छे नहीं है तो ज्यादा sample होंगे, या control अच्छे हैं and books and records are also reliable तो lesser sample होंगे. Very often we use the word part checking. Part checking का मतलब है statistical theory of sampling. The decision whether to use a statistical or non-statistical approach is a matter of auditor's judgment. Statistical means random selection and uses probability theory to evaluate the sample results and the measurement of the sampling risk. ठीक है, और उसमें क्या होता है, पर्सनल एक्सपीरियंस एंड नॉलेज इज यूज्ड बाय द ऑडिटर टू अराइव एट द सैंपल साइज एंड सैंपल कंपोजिशन. हाउएवर सैंपल साइज इज नॉट अ वैलिड क्राइटेरिया टू डिस्टिंग्विश बिटवीन स्टैटिस्टिकल एंड नॉन स्टैटिस्टिकल अप्रोच. मैंने बोला सैंपल साइज इज नॉट अ क्राइटेरिया टू डिस्टिंग्विश बिटवीन स्टैटिस्टिकल एंड नॉन स्टैटिस्टिकल अप्रोच. मैंने बोला ना सैंपल साइज स्टैटिस्टिकल अप्रोच में ऑटोमेटिकली आती है बेस्ड ऑन द फैक्टर ऑफ पीएम. नॉन स्टैटिस्टिकल में अपन ने पढ़ा था सैंपल साइज एंड कंपोजिशन. ठीक है, सैंपल साइज एंड इट्स कंपोजिशन आर डिटरमाइंड बाय द ऑडिटर ऑन द बेसिस ऑफ हिज पर्सनल जजमेंट एंड personal experience and knowledge. ठीक है, so sample size cannot be a valid criteria to distinguish between statistical and non-statistical sampling. What are the factors affecting sampling plan? The factors that should be considered for deciding upon the extent of checking on a sampling plan are the following. मैंने बोला ज्यादा बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा बड़े सैंपल्स. What is the control? कंट्रोल अगर अच्छे तो कम सैंपल, कंट्रोल बेकार तो ज्यादा सैंपल. एडिक्वेसी एंड रिलायबिलिटी ऑफ बुक्स एंड रिकॉर्ड. मैंने बोला अगर बुक्स एंड रिकॉर्ड अच्छी है तो कम सैंपल. सो दीज आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द सैम्पलिंग प्लान. मैंने बोला साइज बड़ी तो ज्यादा सैंपल, कंट्रोल अच्छे है तो कम सैंपल. एडिक्वेसी एंड रिलायबिलिटी ऑफ बुक्स एंड रिकॉर्ड्स. टॉलरेबल एरर. टॉलरेबल एरर अगर ऑडिटर का ज्यादा है. टॉलरेबल एरर क्या होता है, मैंने बोला ये एक ऐसा लेवल होता है जनरली परफॉर्मेंस मटीरियलिटी जो होती है ना, दैट इज द टॉलरेबल एरर लेवल, या फिर एन अमाउंट बिलो द परफॉर्मेंस मटीरियलिटी. बट ऑब्वियसली टॉलरेबल एरर कैन नॉट बी ग्रेटर देन परफॉर्मेंस मटीरियलिटी. ठीक है, मैंने बोला ये वो अमाउंट है जो कि ऑडिटर एक्सपेक्ट करता है कि हाँ इतने की गलती में ओके ओके है, मतलब इसमें कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है ना, मतलब इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मतलब ये टॉलरेबल एरर है ना. तो अगर टॉलरेबल एरर ज्यादा है तो मींस सैंपल्स कम होंगे, अगर टॉलरेबल एरर कम है तो सैंपल ज्यादा होंगे. ठीक है, व्हाट इज द डिग्री ऑफ द डिजायर्ड कॉन्फिडेंस. अगर मुझे कॉन्फिडेंस ज्यादा चाहिए तो मैं सैंपल ज्यादा करूंगा. सो द फैक्टर्स अफेक्टिंग द सैम्पलिंग प्लान आर द फॉलोइंग. साइज ऑफ द एंटिटी, स्टेट ऑफ इंटरनल कंट्रोल, एडिक्वेसी एंड रिलायबिलिटी ऑफ बुक्स एंड रिकॉर्ड्स, tolerable error range and degree of the desired confidence. So what are the advantages of statistical sampling? मैंने बोला sample size उस proportion में नहीं बढ़ती जिस proportion में शायद population बढ़ जाए. So amount of testing does not increase in proportion to the increase in the size of the area. That is, sample size does not increase in proportion to the increase in the size of the population. Sample selection is more objective, ठीक है, and they are more defensible. The method provides a means of estimating the minimum sample size associated with a specified risk. So it helps you in taking a calculated risk and corresponding precision. It provides a better description of the large mass of data. It is widely accepted as it is more scientific. मैंने बोला it's more scientific, it's more objective, it provides a better description of a large mass of data. It's a method for having a calculated risk. And you can say the amount of testing does not increase in size in correspondence to the size of the area. What are the limitations of statistical sampling? The auditor should not attempt to use statistical sampling when another approach is either necessary or will provide satisfactory information in less time or with less effort. For instance, when exactly accuracy is required, or in case of legal requirement. तो मैंने बोला in case of legal requirement or in case of some cases wherein exact accuracy is required, you can avoid statistical sampling. मैंने बोला statistical sampling के फायदे क्या है? मैंने बोला ये ऑब्जेक्टिव है, ये साइंटिफिक है. मैंने बोला इट हेल्प्स यू इन टेकिंग कैलकुलेटेड रिस्क. इट प्रोवाइड्स अ मींस ऑफ एस्टिमेटिंग द मिनिमम सैंपल साइज, and you can say it provides a better description of a large mass of data. Amount of testing does not increase in proportion to the increase in the size. ठीक है, अब हम चलते हैं सैंपल डिजाइन, साइज एंड सिलेक्शंस ऑफ आइटम्स फॉर टेस्टिंग. सैंपल डिजाइन तो हमने बोला
When designing an audit sample, the auditor shall consider the purpose of the audit procedure and the characteristics of the population from which the sample will be drawn. मैंने बोला you have to consider the purpose of the audit procedures, ठीक है? So you have to consider what is the specific purpose to be achieved and what are the combination of audit procedures that is likely to best achieve that purpose. So you have to consider what is the purpose to be achieved. So purpose of the audit procedure and the characteristics of the population from which the sample will be drawn. फिर मैंने बोला the population should be complete, ठीक है? In fulfilling the requirement of SA 500, when performing audit procedure, the auditor performs audit evidence procedure to obtain audit evidence that the population from which the audit sample is drawn is complete. So what is the characteristic of the population? Population should be complete, ठीक है? तो मैंने बोला you have to consider the specific purpose to be achieved along with the combination of the purpose that is best likely to achieve that purpose, ठीक है? Then you need to also evaluate the auditor's consideration of the purpose of the audit procedure includes a clear understanding of what constitutes a deviation or misstatement. So when you are understanding the purpose of the audit procedure, you should be very clear that what will be a deviation or misstatement in your case, so that only those conditions that are relevant to the purpose of the audit procedure are included in the evaluation of deviation or projection of misstatement. तो इसका एग्जांपल हमने पढ़ा कि अगर मान लो किसी बंदे ने आपको 29 मार्च को पेमेंट कर दी, बट आपके यहाँ पे 1 मार्च को पेमेंट पहुंची और आपको जो उसने बैलेंस कंफर्म किया वो 90 रुपए कंफर्म किया, जबकि आपके उसमें 100 रुपए आ रहा था, तो मतलब 10 रुपए इन ट्रांजिट थे, तो क्या आप इसे मिसस्टेटमेंट मानोगे? तो मैंने बोला जवाब नहीं, ये बेसिकली these are funds in transit. So in a test of detail relating to existence of AR such as confirmation, payments made by the customer before the confirmation date but received shortly after that date by the client are not considered a misstatement. Also a wrong posting between the customer account. मान लो A का बैलेंस B में डाल दिया, मतलब A की पेमेंट की रिसिप्ट B की पेमेंट की रिसिप्ट में से डाल दी, हटा दी, does not affect the total AR, it does not affect the total account receivable. However, ठीक है, therefore it may not be appropriate to consider this misstatement in evaluating the sample results, ठीक है? तो अगर A की पेमेंट अगर मैंने B में डाल दी तब भी मेरा टोटल AR में इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा, even though it may have an important effect on the other areas of the audit like aging, ठीक है? एजिंग के बेसिस पे अगर प्रोविजन बन रहा है, ठीक है? सो एडिक्वेसी ऑफ अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट के ऊपर इसका इम्पैक्ट हो सकता है। मैंने बोला यू शुड बी वेरी क्लियर विद द पर्पस ऑफ स्पेसिफिक पर्पस टू बी अचीव्ड एंड व्हाट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर दैट इज लाइकली टू अचीव दैट पर्पस. Auditor's consideration of the purpose of the audit procedure includes a clear understanding of what constitutes a misstatement or deviation, so that all and only those conditions that are relevant to the purpose of the audit procedure are included in the evaluation of deviation or misstatement. ठीक है, तो मैंने बोला you have to understand the specific purpose to be achieved and what is the combination of the audit procedure that is likely to best achieve that purpose. Then you need to also consider what is the evidence that you are seeking for. ठीक है, you have to consider the nature of the audit evidence sought. What is the nature of the audit evidence sought? Means whether it's visual, whether it's audio, whether it's oral, or whether it's written. ठीक है, what is the nature of the audit evidence sought and the possible deviation or misstatement conditions or other characteristics relevant to that audit evidence will assist the auditor in defining what constitute a deviation or misstatement and what population to use for sampling, and then the population should be complete. तो मैंने बोला you have to consider the specific purpose to be achieved, ठीक है, along with the combination of procedures that is best likely to achieve that objective. Then you need to consider what is the audit evidence that has been sought, ठीक है, what is the nature of the audit evidence sought and the possible deviation or misstatement condition or other characteristics to that audit evidence will assist the auditor in defining what constitute a deviation or misstatement and what population to use for sampling. Then your population should be drawn from a complete population, and the auditor's consideration of the purpose of the audit procedure include a clear understanding of what constitute a deviation or misstatement. ठीक है, in considering the characteristics of a population for test of control, the auditor makes an assessment of the expected rate of deviation. Expected rate of deviation मैंने क्या बोला? तो मैंने बोला जब मैं characteristics of population को समझ रहा हूँ for test of control, the auditor makes an assessment of the expected rate of deviation. Similarly, for test of details, he will make a expected rate of misstatement. ठीक है, assessment of the expected misstatement. अगर आपकी expected misstatement ज्यादा है तो आपके samples भी ज्यादा होंगे, अगर आपकी expected rate of deviation ज्यादा है तो आपके sample भी ज्यादा होंगे. ठीक है, तो basically simple है, these are directly proportional. Stratification and value weighted sample, मैंने बोला stratify. In considering the characteristics of the population from which the sample will be drawn, auditor may determine stratification or value weighted selection. Stratification क्या होता है? It improves audit efficiency, may be improved if the auditor stratifies the population by dividing it into discrete subpopulations which have an identifying
कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने बोला एक पॉपुलेशन को डिवाइड कर दो इनटू सब पॉपुलेशंस, लाइक टैबलेट बेचना, कंप्यूटर बेचना, लैपटॉप बेचना, मोबाइल फोन्स बेचना, ठीक है। सो यू हैव डिवाइडेड द टोटल सेल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस इनटू द फोर सब पॉपुलेशन व्हिच हैव सम आइडेंटिफाइंग कैरेक्टरिस्टिक्स. So the objective of stratification is to reduce the variability of items. So this has reduced the variability of the items in sale of electronic devices, which earlier ranged from let's say 10,000 to let's say 1 lakh. Now they are within the particular subpopulation. They have a specific range. So it has reduced the variability of items within each stratum and therefore allowed sample size to be reduced without increasing the sampling risk. So when performing TOD, test of detail, the population is often stratified by monetary value. आप मॉनेटरी वैल्यू के बेसिस पे भी पॉपुलेशन स्ट्रेटिफाई कर सकते हो, लाइक 0 to 2.5 lakh, 2.5 to 5 lakh, 5 to 7.5 lakh, ठीक है. This allows greater audit effort to be directed to the larger value items. So you will select higher value items more in comparison to the lower value item, as these items may contain the greatest potential misstatement in terms of overstatement, ठीक है. Similarly, a population may be stratified according to a particular characteristic that indicates a higher norm. For example, based on the aging, ठीक है. So you can stratify the population based on, let's say, by way of monetary value or by way of aging. So stratification reduces the variability of the population and thus reduces the sample size without increasing the sampling risk. इस सब पॉपुलेशन मतलब बेसिकली टैबलेट्स, कंप्यूटर्स, वो उसको हम बोलते हैं स्ट्रेटम, और उसकी जो यूनिट्स होती है, मान लो फोन्स में भी आईफोन 12, ठीक है, दैट इज वन यूनिट्स इज कॉल्ड स्ट्रेटा, एंड अंडर दो सब पॉपुलेशन यूनिट्स आर कॉल्ड एज स्ट्रेटा, ठीक है. द रिजल्ट्स ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर अप्लाइड टू अ सैंपल ऑफ आइटम्स विद इन अ सैंपल. तो अगर मान लो मैंने टैबलेट्स पे मैंने सब पॉपुलेशन किया और उसके बेसिस का जो सैंपल रिजल्ट है कैन ओनली बी प्रोजेक्टेड टू दैट स्ट्रेटम, ठीक है. इट कैन नॉट बी प्रोजेक्टेड टू द एंटायर पॉपुलेशन. तो मान लो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को मैंने 4 सब पॉपुलेशन में डिवाइड किया, सो द रिजल्ट्स ऑफ द सैम्पलिंग फॉर वन सब पॉपुलेशन कैन नॉट बी एक्सट्रापोलेटेड टू द रिमेनिंग 4 सब पॉपुलेशन. इट नीड्स टू बी फॉर इंडिविजुअल स्ट्रेटम, ठीक है. सो द रिजल्ट्स ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर अप्लाइड टू अ सैंपल ऑफ आइटम्स विद इन अ स्ट्रेटम कैन ओनली बी प्रोजेक्टेड टू द आइटम दैट मेक अप दैट स्ट्रेटम. द रिजल्ट्स ऑफ सैंपल फ्रॉम द यूनिट्स ड्रॉन अंडर ईच सब पॉपुलेशन आर प्रोजेक्टेड टू दैट रेस्पेक्टिव स्ट्रेटम, ठीक है. इसका हमने एग्जांपल लिया, टैबलेट पे अगर टोटल पॉपुलेशन थी 200 और आपको 10 के सैंपल में एक ही गलती मिली, तो आपको इसको इसी पे प्रोजेक्ट करना है, ठीक है, ना कि ओवरऑल पॉपुलेशन ऑफ 1000, ठीक है. तो आपने देखा 300 आप मोबाइल फोन थे, 15 का आपने सैंपल पिक किया, इसमें कोई भी गलती नहीं मिली, तो आपको यहाँ पे इसमें कोई भी प्रोजेक्शन नहीं करनी है. सो अब अपन चलते हैं वैल्यू वेटेड सिलेक्शन पे. मैंने बोला बहुत सिंपल है, ठीक है. इसमें आप मॉनेटरी वैल्यू के बेसिस पे वेट्स देते हो. व्हेन परफॉर्मिंग टेस्ट ऑफ डिटेल इट मे बी एफिशिएंट टू आइडेंटिफाइंग द सैम्पलिंग यूनिट एज द इंडिविजुअल मॉनेटरी आइटम that make up the population. Having selected specific monetary unit item from within the population, for example, the AR balance, the auditor may then examine the particular item, for example, individual balances that contain those monetary units. ठीक है, मैं आपको सिंपल समझाता हूँ. इसमें होगा क्या, मतलब मान लो अगर राम को 100 रुपए देने हैं तो उसकी 100 लॉटरियां डाल दी है, 200 रुपए शाम को देने हैं तो उसकी 200 लॉटरियां डाल दी, ठीक है. सो व्हेन परफॉर्मिंग टेस्ट ऑफ डिटेल इट मे बी एफिशिएंट टू आइडेंटिफाई द सैम्पलिंग यूनिट एज द इंडिविजुअल मॉनेटरी यूनिट्स, लाइक 1 रुपए को 1 यूनिट मान लेना, ठीक है. So sampling unit is ₹1 of monetary unit that makes up the population. Having selected specific monetary unit from within the population, तो अगर मान लो राम की पर्ची आई तो राम का ही सैंपल उठ जाएगा, ठीक है. तो राम शाम की 200 पर्ची है, घनश्याम की 300 पर्ची है, तो ज्यादा चांसेस किसके है, घनश्याम के उठने के, ठीक है. हैविंग सेलेक्टेड स्पेसिफिक मॉनेटरी यूनिट फ्रॉम विद इन द पॉपुलेशन, फॉर एग्जांपल द एआर बैलेंस, the auditor may then examine the particular item, for example, individual balances that contain those monetary items. One benefit of this approach to defining the sampling unit is that audit effort is directed to the larger value items. हम larger value items पे फोकस करेंगे. अब अपन चलते हैं सैंपल साइज के ऊपर. मैंने बोला आपको इतनी सैंपल साइज लेनी है ताकि आपकी ऑडिट रिस्क इज रिड्यूस्ड टू एन एक्सेप्टेबली लो लेवल. ऑडिट रिस्क नहीं, सैम्पलिंग रिस्क, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, सैम्पलिंग रिस्क इज रिड्यूस्ड टू एन एक्सेप्टेबली लो लेवल. तो आपको सैंपल साइज इतनी सफिशिएंट लेनी है दैट योर सैम्पलिंग रिस्क इज रिड्यूस्ड टू एन एक्सेप्टेबली लो लेवल, ठीक है. द लोअर द रिस्क द ऑडिटर इज विलिंग टू एक्सेप्ट, द ग्रेटर द सैंपल साइज विल बी. मैंने बोला जितना ज्यादा कॉन्फिडेंस चाहिए ऑडिटर को उतनी ज्यादा सैंपल साइज होगी, और जितनी कम वो रिस्क एक्सेप्ट करने को राजी है उतनी ज्यादा सैंपल्स होंगे. द सैंपल size can be determined by application of a statistically based formula or through the exercise of professional judgment. Professional judgment हम कहाँ पे लगाते हैं, नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग में. स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग में हम स्टैटिस्टिकली बेस्ड फॉर्मूला के बेसिस पे लगाते हैं. मैंने बोला अगर आपने ऑडिटर की असेसमेंट ऑफ रॉन्ग हैज
taken the reliance on controls. मैंने बोला कंट्रोल, आप बेसिकली आप देख रहे हो व्हाट आर द फैक्टर्स इम्पैक्टिंग सैंपल साइज फॉर टेस्ट ऑफ कंट्रोल। मैंने बोला जब आपने रिस्क असेस की तो आपने ये अज्यूम किया कि कंट्रोल सही चल रहे हैं, तो आपको आपने बेसिकली कंट्रोल रिस्क को कम माना है। तो अगर आपको कंट्रोल रिस्क को कम माना है तो आपको सैंपल्स कंट्रोल्स के ज्यादा टेस्ट करने पड़ेंगे। इसलिए when the auditor's assessment of the ROM included a consideration that the controls are operating effectively, that means the sample size for the controls need to be increased. What increase in the tolerable rate of deviation, मतलब tolerable rate of deviation means आप इतना एरर टॉलरेट कर सकते हो, तो जितने बड़ा एरर आप टॉलरेट कर सकते हो उतनी सैंपल साइज आपकी कम हो जाएगी। तो इट विल लीड टू डिक्रीज इन दी सैंपल साइज, है ना। इंक्रीज इन दी एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन मींस मुझे एक्सपेक्टेशन है कि कंट्रोल वैसे नहीं परफॉर्म हुआ होगा जैसे होना चाहिए था। So increase in expected rate of deviation will increase the sample size. So auditor's consideration of the expected rate of deviation include the auditor's understanding of the business. So it is impacted by the auditor's understanding of the business. In particular, risk assessment procedures undertaken to obtain an understanding of the internal control. What has been the changes in the personnel or what has been the changes in the internal control. तो हमने बोला deviation क्या होती है, मैंने बोला the way control has been performed, the consistency with which the control has been performed, the by whom it has been performed, ठीक है, and how it has been performed, right? So the auditor's consideration of the expected rate of deviation include the auditor's understanding of the business, that is risk, जब आपने risk assessment procedure के काम पे understanding of internal control की है, when changes in personnel या फिर internal control, तो अगर आपको लगता है कि change in personnel हुआ है तो there will be an increased expected rate of deviation, ठीक है। अगर आपकी expected rate of deviation ज्यादा है तो आपको ज्यादा सैंपल चेक करने पड़ेंगे to ensure that the actual rate of deviation is below the expected rate of deviation, ठीक है। The results of the audit procedures applied in the prior period and the results of other audit procedures. हाउ टू कैलकुलेट द रेट ऑफ डिविएशन, एक एग्जांपल है, जैसे लेट सपोज परचेज मैनेजर से अप्रूवल होना चाहिए था, तो हमने बोला 50 में से 46 बार अप्रूवल होगा लेकिन 4 बार अप्रूवल नहीं होगा। मैंने बोला 8% इज द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविएशन। इट डिपेंड्स ऑन द कंसिडरेशन ऑफ द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बिजनेस, व्हाट हैज बीन द रिजल्ट्स ऑफ द रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर अंडरटेकन टू ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंटरनल कंट्रोल, व्हाट हैज बीन द चेंजेस इन द पर्सनल, चेंजेस इन द कंट्रोल, what has been the results of the audit procedures applied in the prior period, मतलब लास्ट ईयर कितनी deviation थी, and what has been the results of the other audit procedures, ठीक है। मैंने बोला जितनी ज्यादा अश्योरेंस चाहिए उतनी ज्यादा मैं सैंपल चेक करूंगा। इंक्रीज इन दी ऑडिटर्स डिजायर्ड लेवल ऑफ अश्योरेंस, तो मुझे जितनी ज्यादा अश्योरेंस चाहिए उतनी ज्यादा मैं इंक्रीज करूंगा। इन केस ऑफ लार्ज पॉपुलेशन द एक्चुअल साइज ऑफ द पॉपुलेशन, मतलब अगर मान लो पॉपुलेशन की साइज इंक्रीज हो जाती है, तो मैंने बोला अगर लार्ज पॉपुलेशन थी तो सैंपल साइज विल नॉट इंक्रीज सच राइट। हमने पढ़ा था ना स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग में ज्यादा उतनी उस प्रोपोर्शन पे सैंपल्स नहीं बढ़ते, राइट। सो इन केस ऑफ लार्ज पॉपुलेशन द एक्चुअल साइज ऑफ द पॉपुलेशन हैज लिटिल if any effect on the sample size. For small populations however, audit sampling may not be as efficient as alternative means. So और obvious सी बात है, अब बेसिकली हो क्या रहा है, आप सैंपल्स ऐड कर रहे हो, तो मैंने बोला लार्ज पॉपुलेशन में इसलिए नहीं फर्क पड़ेगा क्योंकि इतना फर्क नहीं पड़ता, पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है तो, ठीक है। सिमिलरली स्मॉल पॉपुलेशन में इसलिए नहीं फर्क पड़ेगा क्योंकि आपने ऑलरेडी स्मॉल पॉपुलेशन में क्या किया होगा, सब पे ही काम कर लिया होगा, तो जो 2 लाइन आइटम और आए उस पर और आप काम कर लोगे, ठीक है। therefore there will be negligible effect on sample size due to increase in the number of sampling units in the population, so it will have a negligible effect। अभी टेस्ट ऑफ डिटेल पे चलते हैं। मैंने बोला आपने हायर दी ऑडिटर्स असेसमेंट ऑफ रिस्क, तो आपकी रिस्क ज्यादा है तो आप सैंपल भी ज्यादा चेक करोगे, ठीक है। द मोर द ऑडिटर इज रिलाइंग ऑन अदर सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स, मैंने बोला आप ज्यादा रिलाई कर रहे हो दूसरे सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स के ऊपर, लाइक लेट्स से आप एक ही असर्शन के लिए 2 प्रोसीजर कर रहे हो और एक उस पर आप ज्यादा रिलाई कर रहे हो, तो इस वाले के लिए सैंपल साइज आपकी कम हो जाएगी, ठीक है। एंड इंक्रीज इन द ऑडिटर्स डिजायर्ड लेवल ऑफ एश्योरेंस, मुझे जितनी ज्यादा एश्योरेंस चाहिए उतनी ज्यादा सैंपल्स होंगे। इंक्रीज इन द टॉलरेबल रेट ऑफ मिसस्टेटमेंट, मैंने बोला डिक्रीज हो जाएगी सैंपल साइज, ठीक है। एंड ग्रेटर द अमाउंट ऑफ मिसस्टेटमेंट, मैंने बोला मिसस्टेटमेंट में क्या हम देखेंगे, है ना, एक्सपेक्टेड लेवल, टॉलरेबल लेवल ऑफ मिसस्टेटमेंट। So the greater the amount of the misstatement the auditor expect to find in the population, this is the expected rate of misstatement, ठीक है। मैंने बोला मुझे पता है कि ज्यादा गलतियां मिलेगी तो मेरी सैंपल साइज विल आल्सो इंक्रीज। अब ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, द रिजल्ट्स ऑफ द रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, द रिजल्ट्स ऑफ द टेस्ट ऑफ कंट्रोल, द एक्सटेंट टू व्हिच द वैल्यूज आर डिटरमाइंड सब्जेक्टिवली, द रिजल्ट्स ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर अप्लाइड इन द प्रायर पीरियड, कितनी गलतियां लास्ट ईयर मिली थी, व्हाट आर द रिजल्ट्स ऑफ द अदर सब्सटैंटिव प्रोसीजर, सो व्हाट आर द रिजल्ट्स ऑफ POCs, what are the results of the risk assessment procedure, what are the results of other substantive procedures, what are the results of the audit procedure performed in the prior period. So what has been the expected rate of misstatement, उसके लिए मैं देखूंगा prior period में कितनी गलतियां मिली थी, टेस्ट ऑफ कंट्रोल का क्या रिजल्ट है, रिस्क असेसमेंट का क्या रिजल्ट है,
and how values are determined subjectively. When stratification of the population is appropriate in the sample size, तो sample size कम हो जाएगी, क्योंकि stratification से क्या होता है, sample size कम हो जाती है. मैंने बोला अब population बड़ी है, तो मैंने बोला large population में इतना impact नहीं आएगा, small population में impact आएगा, but वहाँ पे आप शायद वैसे भी sampling नहीं करते, वहाँ पे आप 100% ही check करना पसंद करते हो, right? So it will have a negligible effect. ठीक है. अब selection of item for testing, आपको कौन से method select कर सकते हो? The auditor shall select items for sample in such a way that each sampling unit has a chance of selection. With statistical sampling, sample items are selected in such a way that each sampling unit has a known probability of being selected. तो उसकी एक known probability होती है. मैंने बोला ना, it has a random selection and it uses a probability weighted selection. ठीक है. With non-statistical sampling, judgment is used to select sample items. The judgment is of the based on the experience and knowledge of the auditor. ठीक है. Sample should be selected in such a manner that it is representative of the population from which the sample has been selected. Random sampling, मैंने बोला कोई भी sample चुन कर लो. ठीक है. The random selection ensures that, so random systematic MUS, these are all statistical sampling, and haphazard and block sampling is, you can say, non-statistical sampling. अभी चलते random sampling. Random selection ensures that all items in the population or within each stratum have a known chance of selection. Simple random sampling, it may involve use of random number tables, तो कोई भी pick हो सकता है. Random sampling involves two very popular methods which are discussed below, that is simple random sampling and stratified sampling. मैंने बोला simple random sampling में under this method each unit of the whole population है ना have an equal chance of selection. This is very right. Random में कोई भी pick हो सकता है. This does not weigh value to the amount of the sample, right? Any sample can be picked up. So this is right, that it has an equal chance of being selected. Yeah. Simple random sampling. So simple random sampling means each and every sampling unit in the population has an equal chance of being selected. So under this method, each unit of the whole population, that is, for example, a purchase or sale invoice, has an equal chance of being selected. It is considered that the random number tables are simple and easy to use and also provide assurance that the auditor's bias does not affect the selection. So each item in a population is selected by using of a random number table. तो random number table जैसे मैंने आपको run करके दिखाया था, by using the function ran between, तो उसके बेसिस पे जो भी नंबर आया था उसको आपने पिकअप कर लिया था. ठीक है. इधर विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर और पिकिंग अप अ नंबर इन रैंडम वे. तो हमने जो बेसिकली या तो लॉटरी निकाल लो या कंप्यूटर से सिस्टम रैंडम नंबर्स निकाल लो. So today random numbers are also generated using various applications on the cell phones like the random number generator. So this method is considered appropriate provided that the population to be sampled consists of reasonably similar units and fall within a reasonable range. मतलब मैंने बोला it is suitable for a homogeneous population having a similar range. लेकिन अगर मान लो पॉपुलेशन ही बहुत डाइवर्सिफाइड है, लाइक इन केस ऑफ दिस एग्जांपल जहाँ पे ट्रेड रिसीवेबल 500-2500 रुपए से लेके 10,50,000 तक है, तो यू कैन कंसिडर स्ट्रेटिफाइंग द पॉपुलेशन बेस्ड ऑन द मॉनेटरी वैल्यू. ठीक है. सो दिस मेथड इन्वॉल्व्स डिवाइडिंग द होल पॉपुलेशन टू बी टेस्टेड इन अ फ्यू सेपरेट ग्रुप कॉल्ड स्ट्रेटा and taking a sample from each of them. So each stratum is treated as if it was a separate population, and if the proportionate of items are selected from each of these stratum. So I'm selecting proportionate item from each of these stratum. Like you have divided into rupee excess above greater than 10 lakh in the range of 775 to 10 lakh. So we have divided into the following ranges, right? So let's say auditor decided that items above rupee 10 lakh will be selected by the auditor. All items will be selected, and for the second group, that is 25% of the items will be selected for the items between 775 to 10 lakh, and for the third group it will be 10%, and then for the lowest group it will be only 2%. So the reasoning behind the stratified sampling is that for a highly diversified population, weight should be allocated to reflect the differences. This is achieved by selecting different proportions from each strata. Stratifying means dividing heterogeneous population into homogeneous population. Systematic sampling क्या होती है? Basically आप क्या करते हो? It's a selection method in which the number of sampling units, means total items कितने हैं in the sample population, is divided by the sample size to give a sampling interval. ठीक है. तो means 1000 को आपने डिवाइड किया 20 से, तो आपका sampling interval आया 50. तो आप क्या करोगे? एंड हैविंग डिटरमाइन अ स्टार्टिंग पॉइंट विद इन द फर्स्ट 50, तो आप पहले 50 में से एक स्टार्टिंग पॉइंट डिटरमाइन कर लोगे. ईच 50th सैंपलिंग यूनिट देयर आफ्टर इज सिलेक्टेड. मैंने बोला बेसिकली आप क्या करोगे, टोटल जितने भी आइटम्स है इन अ पॉपुलेशन उसको डिवाइड करोगे सैंपल साइज से, तो देयर विल बी अ सैंपलिंग इंटरवल, और आप उस सैंपलिंग इंटरवल में पहला एक सैंपल पिक कर लोगे. तो जैसे लेट्स सपोज सैंपलिंग इंटरवल आया 50, तो इस 50 में से आप पहले एक सैंपल पिक कर लोगे इन
in the first 50, and then thereafter every 50th item will be selected. So although the starting point may be determined haphazardly means अपनी मर्जी से, या फिर the sample is more likely to be truly random if it is determined by using a computerized random number. मैंने बोला या तो haphazardly आप starting point determine कर लो, या आप random number generator के through आप starting point को determine कर लो. When using systematic selection, auditor को ध्यान देना है that the pattern in the population is not structured in such a way that the sampling interval corresponding with the particular pattern in the population. तो मान लो अगर population इस तरीके से structured है कि हर 100वां item consist of a branch cell, तो आप basically अगर आप sampling करोगे ना, है ना, तो मैंने होगा क्या, अगर आपने let's say start point किया, let's say you have started with the point number लेट्स से 49, तो आपका कभी भी कोई भी इंस्टेंस ऐसा नहीं होगा जिसमें ब्रांच से लाई होगी, ठीक है, एंड द सैम्पलिंग इंटरवल सेलेक्टेड इज 100. सो द रिजल्ट वुड बी दैट ईदर द ऑडिटर वुड हैव सेलेक्टेड ऑल ऑफ द ब्रांच सैंपल और नन ऑफ द ब्रांच सैंपल. तो हो सकता अगर मान लो आपका so your sampling interval is 100 and branch cells occurs every 100 time. तो बेसिकली या तो क्या होगा, सारी ब्रांच सेल के सैंपल आ जाएंगे, या फिर नन ऑफ द सैंपल इज ऑफ द ब्रांच सेल. सेम एक और एग्जांपल था जहां पे बेसिकली अकाउंटेंट ए और अकाउंटेंट बी है. अकाउंटेंट ए एक मंथ की सैलरी एक्सपेंसेस प्लॉट करता है और अकाउंटेंट बी दूसरे महीने की सैलरी या एक्सपेंसेस प्लॉट करता है. तो अकाउंटेंट ए है, अकाउंटेंट बी है, ठीक है. तो अब बेसिकली अगर आपने एक ऐसा सिस्टमैटिक सैंपल चलाया जिसमें आप पहले महीने का देखोगे और तीसरे महीने का देखोगे, मतलब दूसरे वाले महीने का नहीं देखोगे, तो चांसेस क्या है कि आप अकाउंटेंट ए या अकाउंटेंट बी किसी ना किसी की पूरी एंट्रियां छोड़ दोगे और हो सकता है कि उसमें शायद मिसस्टेटमेंट हो, ठीक है. मॉनिटरिंग यूनिट सैंपलिंग क्या होता है, इट्स अ टाइप ऑफ वैल्यू वेटेड सिलेक्शन इन विच द सैंपल साइज सिलेक्शन एंड इवैल्यूएशन रिजल्ट्स इन कंक्लूजन इन मॉनिटरी अमाउंट. हैप्पीजार्ड सिलेक्शन क्या होता है, this is the selection method in which the sample is selected without following a structured technique. Although no structured technique is used, the auditor would nonetheless avoid any conscious bias or predictability. For example, like avoiding difficult to locate items or always choosing or avoiding the first or last entries. ठीक है, तो मैंने बोला basically there is no structured technique followed for the selection of sample, and thus but it is ensured that no biasness is reflected, and thus it is attempted to ensure that all items in the population have a chance of selection. FSR selection is not appropriate when using statistical sampling because it's an example of a non-statistical sampling. So although no structured approach is follows, but it is ensured that no conscious bias or predictability is there, so as to basically you can say it does not involve judgment and does not even use random number tables. तो आप haphazardly select कर लेते हो, there is no such structured technique, ठीक है. ब्लॉक सैम्पलिंग में क्या होता है, मैंने बोला आप ब्लॉक ऑफ कॉन्टिग्यूअस आइटम को सेलेक्ट कर लेते हो. दिस मेथड इन्वॉल्व सिलेक्शन ऑफ अ ब्लॉक ऑफ कॉन्टिग्यूअस आइटम मींस लगातार आपने बोला भाई यहाँ से स्टार्ट कर दे और 50 आइटम नीचे वाले सेलेक्ट कर ले. सो ब्लॉक ऑफ कॉन्टिग्यूअस आइटम को यू आर सेलेक्टिंग. ब्लॉक सिलेक्शन कैन नॉट ऑर्डिनरली बी यूज्ड इन ऑडिट सैम्पलिंग बिकॉज मोस्ट पॉपुलेशन आर स्ट्रक्चर्ड सच दैट आइटम्स इन अ सीक्वेंस are expected to be same, ठीक है, are expected to have similar characteristics but different characteristics from the items elsewhere in the population. So you are basically having a range of continuous transaction as a sample. तो हो सकता है the range that you have selected might be have some similar characteristics but it is having different characteristics from the items taken from anywhere in the population. Let's say if you select first 200 sales invoice from the sales take book in the month of September, alternatively take any 4 blocks of 50 sales invoices. Therefore, once the first item in the block is selected, the rest of the block follows items to the completion. So there is a close similarity between this method and non-statistical sampling. तो ये भी एक non-statistical sampling का ही part है. अब now you have to perform some audit procedures, right? जो आपने sample select किए है उसके ऊपर आपको audit procedure करना है. So auditor to perform procedures appropriate to the purpose. So you have to perform procedures which is appropriate to the purpose on each item selected. So I have to perform procedures on each item selected which is appropriate to the purpose. ठीक है, हो सकता है that audit procedure is not applicable to that item selected. तो क्या हो सकता है, इसके लिए आप एग्जांपल ले लो कि जैसे लेट सपोज आपने एक चेक को सेलेक्ट किया बट दैट चेक वाज कैंसिल्ड चेक
and you were basically testing the payments. Okay, so while testing for the payment of payment authorization, you selected one check that has been cancelled. If the auditor is satisfied that the check has been properly cancelled and such that it does not constitute a deviation, तो मतलब ऐसा क्या हुआ था, check was properly authorized but then eventually cancelled. ठीक है, अब आपको चेक क्या करना है, पेमेंट ऑथराइजेशन का सैंपल चेक करना है. ठीक है, so check was paid to the creditor but creditor could not deposit within 3 months and therefore the check was cancelled. तो अब आपको पेमेंट ऑथराइजेशन के लिए सैंपल टेस्ट करना है, बट इससे पेमेंट तो हुई नहीं. So you will consider about replacing this sample. So the audit procedure is not applicable. So what I want to test is, so you have to perform procedure appropriate to the purpose on each item selected. ठीक है, तो here the audit procedure is not applicable on this cancel check. मेरा पर्पस क्या था कि मैं पेमेंट को चेक करता हूँ. So when a cancel check is selected, while testing the evidence for payment of authorization, if the auditor is satisfied that the check has been properly cancelled such that it does not constitute a deviation, an appropriately chosen replacement is examined. तो मैंने बोला I will consider about replacing this sample. A replacement would then mean a proper and valid check through which payment has been made. तो मैंने बोला गलती से क्या हुआ, जब मैं पेमेंट ऑथराइजेशन का सैंपल पिक कर रहा था तो मैंने एक चेक पिक कर लिया. अब वो क्या हुआ, वो चेक निकला कैंसल्ड चेक. अभी जबकि वो इशू सही तरीके से हुआ था, प्रॉपरली इशूड हुआ था, बस वो कैंसिल इसलिए करना पड़ा कि 3 महीने की वैलिडिटी जो थी वो एक्सपायर हो गई. ठीक है, सो मैंने बोला इफ व्हेन अ कैंसल्ड चेक इज सेलेक्टेड व्हाइल टेस्टिंग फॉर एविडेंस ऑफ पेमेंट ऑथराइजेशन, इफ द ऑडिटर इज सर्टिफाइड दैट द चेक हैज बीन प्रॉपर्ली कैंसल्ड एंड सच दैट इट डज नॉट कंस्टिट्यूट अ डेविएशन. ये डेविएशन नहीं है, इसका कारण क्या है, इट वाज प्रॉपर्ली इशूड, इट वाज प्रॉपर्ली ऑथराइज्ड and it has been cancelled only for the, it has been properly cancelled and it has been cancelled only due to one reason, that is the expiry of the validity period of the check. So a replacement item would mean a proper and valid check through which payment has been made. So another example for replacement of sample could be if the transaction of computerized sales are being checked. So I am checking all the computerized transaction, like जो बार कोड से ट्रांजेक्शन डली है. ठीक है, सो सेल्स रिकॉर्डेड थ्रू अ बार कोड स्कैनर. तो आई एम चेकिंग ए कंप्यूटराइज सेल ट्रांजेक्शन, बट उसमें गलती से क्या हुआ, एंड इंसिडेंटली अ सैंपल ऑफ मैनुअल बिलिंग गेट्स सेलेक्टेड. तो मैंने बोला बार कोड स्कैनर वाले में गलती से क्या हुआ, एक मैनुअल सैंपल सेलेक्ट हो गया. इन सच देन सच आइटम कैन बी रिप्लेस्ड after adequately checking the correctness of the manual bill with the supporting documents available. If replacement is not possible or reasonable, alternative audit procedures can be performed. So मैंने बोला you have to perform procedures, you have to perform procedures on the item selected which is appropriate to the purpose. ठीक है, and if the procedure is not applicable, then you can perform procedure on the replacement item. ठीक है, you can perform procedures on the replacement item, like if the cancelled check is selected while testing for the evidence of payment authorization, the auditor can check the another sample for the check that has been properly and validly issued and for which the payment has been made. And let's say if the auditor not able to apply designed audit procedure or suitable alternative audit procedure. So I am not able to apply the designed audit procedure or suitable alternative procedure. So auditor shall treat that item as a deviation from the prescribed control or a misstatement in case of test of detail. So मैंने बोला auditor is not able to apply designed audit procedure or suitable alternative procedures. मैंने बोला I am not able to design audit procedure or perform suitable alternative procedure, then it should be considered a deviation or a misstatement. So when the auditor is unable to apply the designed audit procedure to a selected item is when documentation related to that item has been lost. तो मान लो सेल का इनवॉइस, सेल का ऑर्डर, सेल का डॉक्यूमेंट फॉर डिस्पैच हैज बीन लॉस्ट. तो आपने सोचा कि मैं कंफर्मेशन ले लेता हूँ. ठीक है, कंफर्मेशन कैन बी सॉर्ट फ्रॉम डेटर एज पर एस 505. If it's a cash sale, the cash book can be cross-verified for the existence of such transaction. But आपने जब डेटर से कंफर्मेशन ली, suitable alternative procedure for the confirmation is if you can verify the subsequent cash receipt together with the evidence of their source and the items they are intended to settle. तो मैंने बोला क्या मुझे subsequently पैसा आ गया है, उसी पार्टी से आया है एंड उसी इनवॉइस के अगेंस्ट आया है. तो मैंने बोला सब्सिक्वेंट कैश रिसिप्ट आ चुकी है, एविडेंस ऑफ देयर सोर्स किससे पैसा आया, मतलब उसी पार्टी से आया है, एंड द आइटम्स दे इंटेंड टू सेटल, दैट इज it has been received against the same invoice for which I have picked the sample. When row reply has been received in response to a positive confirmation request. So you are also not able to get the
confirmation, so you perform some alternative procedure. But let's say if you are not also able to perform the alternative procedure, so auditor not able to apply the designed audit procedure or suitable alternative procedure, then it should be considered as a deviation or a misstatement. So for example, let's say if the documentation relating to an item has been lost, like sale ke liye, sale order, sale invoice, document for dispatch has been lost, then you decided to send in confirmation as per SA 505. If it was a cash sale, then you cross verified for such sale in the cash book, and you also perform suitable alternative procedure for examination of the subsequent cash refund. So मैंने बोला you have to perform audit procedures appropriate to the purpose on each item selected. And if say the audit procedure was not applicable, then you should consider for the replacement item. And if the auditor not able to apply designed audit procedures, the auditor is not able to apply the designed audit procedure or suitable alternative procedure, it should be treated as a deviation from a prescribed control or a misstatement in case of टेस्ट ऑफ डिटेल. या तो उसे डिविएशन मानो या फिर मिसस्टेटमेंट मानो. ठीक है, तो अभी हो सकता है when you are analyzing the nature and cause of deviation and misstatement, you find out that in analyzing the deviation and misstatements identified, the auditor may observe that may have a common feature. For example, that the all or are credit memos, that is similar type of transaction. They are all pertaining to the बिहार लोकेशन या फिर लेट्स से राजस्थान लोकेशन, ठीक है, या दे पर्टेन टू द सेम प्रोडक्ट लाइन और दे पर्टेन टू द सेम पीरियड ऑफ टाइम. तो मैंने बोला व्हेन यू आर एनालाइजिंग द डेविएशन एंड मिसस्टेटमेंट आइडेंटिफाइड, द ऑडिटर में ऑब्जर्व दैट दे हैव सम कॉमन फीचर, दैट इज टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन, लोकेशन, प्रोडक्ट लाइन और पीरियड ऑफ टाइम. When in such circumstances, the auditor may decided to identify all items in the population that possess the common feature, that is type of transaction, location, product line, or period of time, and extend audit procedures to those items. In addition, such deviations or misstatement may be intentional and may indicate the possibility of fraud. So in addition, such deviation or misstatement may be intentional. तो मैंने बोला हो सकता है आपको कुछ common feature मिल जाए, हो सकता है आपको कुछ common feature मिल जाए. Therefore, the auditor shall investigate the nature and cause of any deviation or misstatement identified and evaluate their possible effect on the purpose of the audit procedure and the other एरियाज ऑफ द ऑडिट. मैंने बोला या तो आपको कॉमन फीचर मिल जाएगा या आपको कोई एनॉमली मिल जाएगी. एनॉमली मींस the thing that is only specific to the sample. ठीक है, in the extremely rare circumstances when the auditor considers a misstatement or deviation discovered in a sample to be an anomaly, the auditor shall obtain a high degree of certainty that such misstatement or deviation is not representative of the population. मैंने बोला that misstatement or deviation is not representative of the population and that is an anomaly. The auditor shall obtain this degree of certainty by performing additional audit procedure to obtain sufficient appropriate audit evidence that the misstatement or deviation does not affect the remainder of the population. It does not affect the remainder of the population and it's an anomaly. तो आपको शायद common feature मिल जाए when you are analyzing the nature and cause of deviation and misstatement, या फिर आपको anomaly मिल जाए. ठीक है, तो what are the procedures? You have to perform audit procedures relevant to the purpose on each item selected, appropriate to the purpose. If the audit procedure is not applicable, then you should consider about replacement item. And if the auditor not able to apply design audit procedure or suitable alternative procedure, then it should be treated as a deviation or a misstatement in case of test of details. Okay? And nature and cause of misstatement, it may have some common feature, or you can say it maybe have some anomaly. ठीक है, in very extremely rare circumstances. अभी आपको क्या करना है, जो आपको सैंपल में गलती करी है उसको आपको प्रोजेक्ट करना है टू द एंटायर पॉपुलेशन. द ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू प्रोजेक्ट मिसस्टेटमेंट्स फॉर द पॉपुलेशन टू ऑब्टेन अ ब्रॉड व्यू ऑफ द स्केल ऑफ मिसस्टेटमेंट, बट दिस प्रोजेक्शन मे नॉट बी सफिशिएंट टू डिटरमाइन एन अमाउंट टू बी रिकॉर्डेड. तो आपको क्या करना है, जो सैंपल में गलती मिली है, अगर मान लो 100 करोड़ की पॉपुलेशन में आपने 10 करोड़ का सैंपल चेक किया और उसमें अगर आपको 1 करोड़ की गलती मिली है, तो आपको 1 करोड़ को डिवाइड करना है 10 करोड़ से और आपको देखना अगर 100 करोड़ पे मैं ये सैंपल करता तो मुझे 10 करोड़ की गलती मिलती. दिस इज नोन एज प्रोजेक्टेड मिसस्टेटमेंट. आपको ये प्रोजेक्शन इसलिए करनी है ताकि आप ये ढूंढ पाओ कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ मिसस्टेटमेंट दैट वुड हैव हैपेंड. ठीक है, लेकिन इट इज नॉट सफिशिएंट. सो दिस प्रोजेक्शन ऑफ ₹10 crore इज नॉट सफिशिएंट फॉर द पर्पस ऑफ एन अमाउंट टू बी रिकॉर्डेड. So the auditor is required to project misstatement for the population to obtain a broad view of the scale of misstatement, but this projection may not be sufficient to determine an amount to be recorded. When a misstatement has been established as an anomaly, जब आपने किसी misstatement को बोला है कि वो anomaly है,
तो मान लो 200 में से 5 करोड़ की आपने बोला एनॉमली है, आपने 10 करोड़ के सैंपल में 5 करोड़ का ये सैंपल चेक किया जो कि एनॉमली था, आपने 1.5 करोड़ की मिसस्टेटमेंट मिली जिसमें से 1 करोड़ की मिसस्टेटमेंट इससे थी, तो आपने बोला जो एनॉमली से मिसस्टेटमेंट हुई है इसको मैं पूरी पॉपुलेशन पे प्रोजेक्ट नहीं करूंगा, तो आपने बोला जो मैं प्रोजेक्शन करूंगा वो मैं 0.5 को प्रोजेक्ट करूंगा। मैंने बोला 0.5 की मुझे गलती मिली है जब मैंने 5 करोड़ का सैंपल देखा है, अगर मैं 195 का पॉपुलेशन देखता तो मुझे 20 का प्रोजेक्टेड मिसस्टेटमेंट मिलता। तो मैंने बोला जो मुझे अनॉमली पे मिला है ना मिसस्टेटमेंट, मैं उसको पूरी पॉपुलेशन पे प्रोजेक्ट नहीं करता हूँ। So when a misstatement has been established as an anomaly, it may be excluded when projecting misstatement to the population. However, the effect of any such misstatement, if uncorrected, still needs to be considered in addition to the projection of the non-anomalous misstatement. तो आपने बोला अगर 0.5 करोड़ 5 करोड़ पे मिसस्टेटमेंट हुई है आउट ऑफ 195 करोड़, मतलब इफ वुड हैव हैपेंड ऑन 195 तो अमाउंट आता 20 करोड़। अभी आपको लेकिन पता है 1 करोड़ की अनोमली को आपने एक्सक्लूड किया हुआ है, सो यू हैव टू total 1 and 20 to arrive at the total misstatement. So total misstatement is equivalent to anomaly plus projected misstatement on other samples. So when a misstatement has been established as an anomaly, it may be excluded when projecting misstatements to the population. However, the effect of any such misstatement, if uncorrected, still needs to be considered in addition to the projection of the non-anomalous misstatement. For TODs, the auditor shall project misstatement found in the sample to the population, whereas for test of controls, there is no need for extrapolation. क्योंकि जो डिविएशन की रेट आएगी, तो मैंने बोला व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, मैंने बोला कितनी बार कंट्रोल परफॉर्म हुआ, मैंने बोला मैंने 4 सैंपल लिए उसमें से सिर्फ 2 बार ही कंट्रोल परफॉर्म हुआ, तो मैंने बोला डिविएशन रेट क्या है 50%। मैंने बोला इसको प्रोजेक्ट करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने बोला अगर मैं इसे प्रोजेक्ट करता तो भी सेम ही आंसर आता। तो अगर मान लो मैंने 4 सैंपल पिक किए आउट ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ लेट्स से 20, ठीक है, मैंने बोला 4 में से मुझे 2 में गलती मिली, तो मैंने बोला अगर मैं 20 पे करता तो मुझे 10 में गलती मिलती, तो 10/20 वुड ऑल्सो बी द सेम आंसर, ठीक है। सो इन केस ऑफ टेस्ट ऑफ कंट्रोल, नो एक्सप्लिसिट प्रोजेक्शन ऑफ डिविएशन इज नेसेसरी सिंस द सैंपल डिविएशन रेट इज ऑल्सो द प्रोजेक्टेड डिविएशन रेट फॉर द पॉपुलेशन एज अ होल। तो ये हमें कॉन्सेप्ट भी समझ आ गया कि टेस्ट ऑफ डिटेल इन्वॉल्व्स अमाउंट एंड देयरफॉर द प्रोजेक्टेड अमाउंट विल बी डिफरेंट, बट रेट मींस परसेंटेज will not change of a sample to the total population, and therefore the test of controls does not require any projection of the misstatement, and the sample deviation rate is the population deviation rate. अब हम चलते हैं evaluating the results of audit sampling. The auditor shall evaluate the results of the sample and whether the use of audit sampling has provided a reasonable basis for the conclusion about the population that has been tested. So auditor shall evaluate what has been the results of sample and whether the use of audit sampling has provided a reasonable basis for conclusion about the population. So auditor has to conclude on the population based on the sample tested, ठीक है। And stratification means subpopulation में बांटना. Tolerable misstatement means a monetary amount set by the auditor in respect of which the auditor seeks to obtain an appropriate level of assurance that the monetary amount set by the auditor is not exceeded by the actual misstatement. What is the tolerable? It's a rate of deviation from the prescribed internal control procedure set by the auditor in respect of which the auditor seeks to obtain an appropriate level of assurance that the rate of deviation set by the auditor is not exceeded. तो ये भी हमने समझ लिया। प्रोजेक्टिव मिसस्टेटमेंट, मेजर एंड कॉज, यहाँ पे आपको शायद कॉमन फीचर मिल जाए या कुछ एनॉमली मिल जाए। What are the procedures, performing audit procedures? Then we also looked upon block sampling, haphazard, monetary unit, systematic, stratified sampling, simple random sampling. ये हमने समझ लिया पूरा। Then we learned about the sample size. Then we also touched upon the sample stratification, value weighted, you can say sampling, and you can say then we also touched upon the sample design, wherein we learned about what is the specific purpose and what are the combination of your procedures to best achieve that purpose, what is the audit evidence sought in the circumstances, and what is the possible deviation or misstatement, right? Advantages of statistical sampling, what are the factors? Higher the size, the bigger the organization, the bigger the sample size. What is the better the controls, the lower the sample size. The adequacy and reliability of books and record, tolerable errors, degree of the confidence. Then traditional method versus statistical method of sampling versus non-statistical sampling unit. We discuss characteristics of population like appropriateness, completeness, reliability. And then we also touched upon that audit sampling means procedures performed to less than 100% of items within a population. So that was it, what we have covered today. Thank you guys for joining in.
Do let me know in your comment section whether you are liking these videos or not, because these are the only source of motivation for me. So hopefully you are liking the content, and let me know your thoughts in the comment section. So that's all for today. Have a good day. Bye.